ऐसा हुआ है। तो जब मैंने मुन्ना भाई सर्किट किया था ना, तो उसके करीब 6-8 महीने तक मुझे कोई काम नहीं मिला था। दुनिया भर के अवार्ड, सारे अप्रिसिएशन, सब कुछ हुआ, बट जॉब नहीं मिला। Is working. Kajol is one actress. I worked in Pyar Kiya to Darna Kiya with her, and I was new, and I used to see her laugh, joke, sit with a book and all that stuff, and just the director would say that you ready for the shot, and till the action she would be little distracted. September 2022 में आपने जब टेनिस से रिटायरमेंट ली, what went through your mind, and are you tired of Rj Prerna? I think you're creating a racket here. Huh? What do you miss about being young? पिछले साल की बात है। He's aged in the last 1 year. It's all Fastest aging person. मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है is one of the underrated Thank you very songs. much. I really feel. You're talking to me about It is- currently you're telling me this. मतलब I have on loop, not even, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुना है, जोर जोर से गाया है मैंने, वैसे एकदम। 88.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है और मेरे साथ में बंदा सिंह चौधरी की कास्ट है, साथ में द प्रोड्यूसर अरबाज खान, प्लीज क्लैप wherever we're at, अरशद वारसी, मेहर रिच एंड अभिषेक सक्सेना। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू मिर्ची। It's nice to see everyone up and shining, even after answering जितने सारे सवाल हैं again and again. It's amazing. It's amazing. The kind of questions जैसे कि आपने अपने किरदार के लिए तैयारी कैसे की अरशद? सुबह उठता था, नहा धो के कपड़े पहन के चले जाता था। So यहाँ पे कोशिश यही रहेगी फिल्मी मिर्ची के शो के लिए कि ऐसे सवाल पूछे जाएं आपसे जो शायद आपने जिनके जवाब नहीं दिए हैं, बट इफ इन केस अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। या अरबाज, ये बताइए, सितंबर 2022 में आपने जब टेनिस से रिटायरमेंट ली, what went through your mind, and are you tired of Rj Prerna? I think you're creating a racket here. Huh? See, I'm telling you, he's the funniest Khan of the lot. No, but on a serious note, ये कहीं पे पढ़ा था मैंने कि if you want to be a good producer, आपको एक अच्छा teammate होना ज़रूरी है. Is there a sport that you really love? Do you think you're a great teammate? What are your comments? Cricket, football, yeah. I love these sports. और ये सारे जो sports हैं इसमें Tennis तो you know how. How amazing! इसको तो मैं गिनता ही नहीं हूँ. चीज़ में मैं माहिर हूँ, वो ठीक है. These are other sports that. I hope I don't get rogered here. Arbaaz creating a racket on being rogered in this interview of Bandaa Singh Chaudhary. But coming to Arshad, one of my favorite films आपकी जो है वो अभी भी हीरो हिंदुस्तानी, and I really miss आप कैसे लगते थे उसमें, आप कितने यंग थे उसमें. What do you miss about being young? पिछले साल की बात है। He's aged in the last 1 year. It's all Fastest aging person. He's going for his diagnosis. Is it the traffic जिसकी वजह से He's आप not doing it like wine. I said he's not doing it like wine. one thing that you really, on a serious note, it is कुछ ऐसा आप मिस करते हैं being young? No, not at all. Yeah. Not at all? No, please. Been there, done that. Don't want to do it again. One thing that's the best about being old, आपको क्या लगता है कि I think there's gold attached to being old. There's a lot of gold. Old is gold. He's looking at the gold part of it. Circuit was looking at the gold part of it for sure. We see you in a lot of silver jewelry right now, so that's also. No, that's I just like doing all this. Yeah, but Arshad, on a much more serious note, Bandaa Singh Chaudhary has come to you at a time where do you think कि cinema बदला है and there's too much for you to offer and to prove yourself again. Do you take? I don't want to prove. I never tried to prove myself before. I'm not trying to prove myself now. See, I tell you, good stories now, or let's say emotion, like how Arbaaz says, if I give you sugar, how it tastes to you and to me is the same. Salt will taste the same to you. I think good stories do that. Time doesn't matter. Now, 10 years later, वगैरह जब भी है, but a good story, when you see it, you feel good. That's how it is. Bandaa Singh is like that. Yeah. It's a beautiful story. It's a lovely story. So it doesn't matter which time or when does it come. Yeah. Not important. Yeah. आपने ये भी कहा है, Can I just yes please. जैसे कि कहानी तो अच्छी होती ही है, लेकिन जो लोग ऑडियंस जो लेके जाती है फिल्मों से वो होते हैं किरदार. तो इफ यू कोई भी फिल्म के बारे में आप जिक्र करोगे ना,
अमर अकबर एंथनी हुई या शोले हुई, तो आपको कैरेक्टर्स के नाम याद आएंगे, गब्बर, जय, वीरू, बसंती, you know, these kind of names, you know, any film you take, you know, you'll remember the names of the characters because they will resonate. So when a character works, जो चलता है तो audience relates with that character. So this Bandaa Singh Chaudhary is one such character in the script which people will relate to, and that when those things happen, eventually automatically people start liking those films and they have a better chance of doing well. Right. That's amazing. क्या आपको लगता है कि सर्किट से आगे बंदा सिंह चौधरी जा पाएगा या फिर it's just going to be somewhere around this? यार मैंने कभी ये सोचा नहीं कि कौन सा कैरेक्टर किसके आगे जाएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक वो फेयर है. हर कैरेक्टर की अपनी जगह है और बंदा सिंह अपनी जगह. यू कांट कंपेयर सर्किट टू बंदा सिंह और बंदा सिंह टू एनी अदर कैरेक्टर दैट हैव डन. ये सब की अपनी अपनी जगह है एंड सब अपनी स्पेस में बहुत सही हैं. मुझे पर्सनली बंदा सिंह कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये बड़ा आइडेंटिफाइबल है, बड़ा नॉर्मल सा है, बड़ा प्यारा सा इंसान है जो जिसको सभी प्यार करते हैं, यू नो. और एक क्या कहते हैं, गट्स है उसके अंदर, एक जिगर है, एक करेज है, व्हिच इज व्हाट इज गुड. यार इट्स अ नाइस थिंग. मेहर, आप थक चुकी हैं ये कि रब की मेहर अब हमारे साथ में है, इस लाइन से आप कितनी टायर्ड हैं, ज़रा आप हमारे मिर्ची के लिसनर्स को बताएं. टायर्ड तो अच्छी बात है, अच्छी बात बोलते हैं लोग, मैं खुश हो जाती हूँ. सो स्वीट. अब ये बताइए और ये सच सच बताइए मेहर, जब बजरंगी भाईजान, सीक्रेट सुपरस्टार हैपेंड एंड यू वर गिवन सो मेनी अवार्ड्स और इतने एक्कलेड्स और आपको कंपेयर किया गया विद द स्मिता पाटिल और उसके बाद में बिल्कुल काम नहीं था. इज दिस मोमेंट द राइट मोमेंट फॉर यू टू गिव द आंसर टू, मतलब अगर आप इतना अप्रिसिएशन दे रहे हैं तो व्हाट हैपेंड? जवाब देता हूँ. मेरे साथ ऐसा हुआ है. तो जब मैंने मुन्ना भाई सर्किट किया था ना, तो उसके करीब 6-8 महीने तक मुझे कोई काम नहीं मिला था. दुनिया भर के अवार्ड, सारे अप्रिसिएशन, सब कुछ हुआ, बट जॉब नहीं मिला. तो मैं राजू को फ़ोन करके बोला, यार ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो अच्छा काम किया, तो प्रॉब्लम क्या है? तो राजू टोल्ड मी, सर प्रॉब्लम तेरा क्या हो गया ना, तूने अच्छा काम किया है, नोबडी नोज वेयर टू पुट यू नाउ. So he said that is the issue, which is I totally understand that. And where do you put you? तुमको हीरो नहीं बना सकते, तुमको हीरो के बाजू वाला नहीं बना, कहाँ डाले तुमको, समझ में नहीं आ रहा है. So that becomes a whole problem till one finds a way and then it all organically falls into place. Coming to the maker, इस फिल्म के लिए मुझे नहीं लगता कि गालियाँ मिलने वाली हैं. It's just going to be a lot of accolades, love, appreciation. You're happy? आप तैयार हैं? जितने आपको तालियां भी मिलेंगी और जितने आपको अप्रिसिएशंस भी मिलेंगे, आपको लगता है you've done your best? बेस्ट तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बेस्ट का तो कोई कभी बेस्ट मुझे पता ही नहीं बेस्ट होता है कि. मैं तो ऑलवेज आई एम वर्किंग एवरी डे और उससे बेटर करना चाहता हूँ हमेशा. आज अगर मैं बंदा सिंह शायद आज बनाऊंगा तो हो सकता है इससे और एक स्टेप आगे जा सकूँ. तो बेस्ट का तो मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि जो मैंने बनाया है या जो हम सब ने मिलकर बनाया वो बहुत सुर में है और वो लोगों को बहुत पसंद आने वाली है फिल्म. मेहर, आपने बताया कि कई लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि काफ़ी सारी नई चीज़ें की हैं आपने इस फिल्म में, यू नो, द सिक वेपन एंड द आर्ट, द प्रेपरेशन फॉर इट एक्सेट्रा. ऐसी चीज़ जो आपने की है, जो आपने शायद पिछली फिल्म में भी की थी, बट यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ इट, वो कौन सी चीज़ होगी? ड्रामा. थोड़ा ये ड्रामा बेटर करने लगी हूँ पहले से, और मुझे थोड़ा और समझ ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन वो भी बता दो. How much has your wedding contributed to that performance? Always sort of working from nostalgia. हाँ, अभी आंसू आ सकते हैं. Learn how to capture, how to captivate, them and keep them intrigued. That's something that I've learned. On the same lines, अर्शद, मेरा सवाल आपके लिए है कि you are the no nonsense, normal yet extraordinary guy. आप कहते हैं कि आप में courage नहीं पड़ा. I think just to be you, I think is courageous enough. And I'm not just trying to patronize you. I just feel, I think it's a very cool demeanor that you have. You do, right? I'm glad you accept that. What do you think आपका सबसे बेहतरीन professional trait है जो आपने constantly you worked on so that you can become a great actor plus a great human to work with? It may not come across because I like to enjoy my work. So on the set, I'm having a great time. I'm fooling around. I'm doing so. Somebody who doesn't understand me will think कि ये मजाक कर रहा है, serious नहीं है. But no, I'm very serious. जब जो वक्त serious रहने का होता है, वहाँ पे मैं बहुत serious हूँ. So I just lost my train of thought. आपका एक ऐसा professional trait जो आपने Okay, so मेरा क्या है ना, जो
जो मेरा होमवर्क आई वुड से नो इज नॉट अ विजिबल होमवर्क. सो व्हेन आई हियर अ स्क्रिप्ट ना, जैसे उसने मुझे सुनाया बंदा सिंह, ये ऐसा कैरेक्टर है, अब जब तक मैं वो फिल्म ख़त्म नहीं करूँगा ना, वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में बैठा रहेगा. That doesn't leave my sight, leave my mind. So constantly I'm looking at somebody who's like that. Constantly I'm thinking about it. If I see something that, because it's in my head, it connects and I said, ये सही है it, ये अच्छा है, तो ये चलता रहता है all the time. Like right now, I'm preparing for something else. In my head, it is there all the time. So this is how I work. Right. And there are actors like that. I've experienced those in one on Salman is like that. Okay, same demeanor. That you feel it's come unprepared maybe, but their mind is working. Kajol is one actress. I worked in Pyar Kiya to Darna Kiya with her, and I was new, and I used to see her laugh, joke, sit with a book and all that stuff, and just the director would say that ready for the shot, and till the action she would be little distracted, and bang, when the word action is there, she's in character. And I'm like, how does she do it? Yeah. And and she would go back and again sit with a book or listen to some music or get on the phone. I'm like, this whole thing about being in the character, being in the role, acting is always been a craft. It's like, if you keep getting into a certain moment and you only wait for a conducive way to do it, like say you want to cry or you want to laugh. But filmmaking में बहुत सी चीजें होती हैं. Somebody would forget their lines, or the light would flicker, or something would happen. Now you have to recreate that again. Now if you are constantly only waiting for that ideal situation, you'll never be able to do it. So you have to be good at your craft. That रोना है रोऊंगा, ये करना है वो करूँगा. So that is where good professional actors are. They don't need to be, conducive atmosphere नहीं ज़रूरी है उनके लिए. In that film also, in Pyar Kiya To Darna Kiya, now that you're talking about it, Teri Jawani Badi Mast Mast Hai is one of the underrated Thank songs. you very much. Yeah, I really feel. You're talking to me about It is- currently you're telling me this. मतलब I have on loop, not even, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुना है, जोर जोर से गाया है मैंने, वैसे एकदम उस तरीके से. आपके हिसाब से ऐसा underrated गाना आपका खुद का जो आपको लगता है कि people should probably now go and revisit? I think so. From so many films that I have done, and I've done quite a few songs also in those films. I think this has been one of the most popular songs that I've done. So it was Sajid Wajid's first break. This was their first song. So I think that song has done. But there's a recognition with me and that song. Yeah. So I think it has worked in that sense. For sure, for sure. Kept And me so young from then till now, but still. you just look at yourself now, take a look at your eyelashes. They are longer than the Atal Setu. ठीक है, so we'll talk about that later. अरशद, इस फिल्म में भी कुछ गाने हैं. आप खुद एक डांसर, कोरियोग्राफर रह चुके हैं. And how important is music for you in general? I like it. Music is good, yeah. Music is wonderful. I mean, I think all our sensibility and all our moods are dependent on that. Absolutely. You go to work out, you want to hear this kind of music, you're relaxing, you want to hear that kind. Yeah. Music is important. I think इस फिल्म के भी गाने बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं. In fact, they will be a big contributor. Like most films that do very big business, if you notice one common factor in them, you take Animal for that matter, which has been recently one of the biggest hits. See the music of that film. Music is a very, very big draw for a film. All successful films. And India is culture. कभी वो थी ना स्त्री के दो गाने देख लो, इतने बड़े हिट हैं. तो गानों से बहुत फर्क पड़ता है. गानों से always, it has always been the case. You take it from दिलवाले, प्यार, मैंने प्यार किया. You take all those great films, they're all क़यामत से क़यामत तक. From any film you take, they are all got great success. गाना visibility इतनी बढ़ जाती है उस फिल्म की. Absolutely. अभिषेक, दुनिया की हर चीज़ में मेरे हिसाब से मैथ्स है. फिल्म मेकिंग में किस प्रकार का मैथ्स होता है? I'm not talking about कितना पैसा आपकी फिल्म बनाएगी. The kind of maths that you need to work with on a daily basis, वो कौन सा होगा? आई थिंक मुझे लगता है कि स्टोरीज कलेक्ट करने में ही एक मैथ्स है, उसके अलावा कोई मैथ्स नहीं चलती फिल्म मेकिंग के अंदर. और कोई कैलकुलेशन नहीं चलती, सारी कैलकुलेशन फेल हो जाती. इफ़ यू थिंक कि नहीं कॉमेडी चल रही है तो कॉमेडी चलेगी, ये भी श्योर नहीं है. फिर आप सोचते हो कि सीरियस कंटेंट चलेगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है. इट्स ऑल अबाउट अ गुड स्टोरी एंड people how conviction to it, conviction to what you're doing. आपका अगर भरोसा, आपकी टीम का भरोसा है ना, और आपको उस कहानी पे विश्वास है, तो पक्का वो वर्क करेगी. जैसे सर ने एक बहुत अच्छी बात आज बोली कि जो कहानी होती है ना, अगर आपको उस पर भरोसा है
और आपको जैसे मीठा मीठा लगता है, कड़वा कड़वा लगता है, खट्टा खट्टा लगता है। अगर आपको कहानी मीठी लगी है तो सामने भी मीठी लगेगी फॉर श्योर। अगर आपने सिर्फ एक मैथ्स लगा के बना दी कहानी कि नहीं अभी ये चल रहा है मैं बना देता हूँ, तो कभी वर्क नहीं करता। What a gamble! It's you know to make a film is quite something. एक गैम्बलर बैठे हैं हमारे साथ। Calculated gamble, to be honest. It's actually it is a huge gamble for the simple reason is like today if I like a subject, just the idea, by the time I उसको develop करके उसको script में बना के उसकी casting करके उसको shoot करके release करने में minimum 1.5 साल लगता है, right? Minimum ज़्यादा भी लग सकता है। बट 1.5 सालों के अंदर करीब 250-300 फिल्में आज आ चुकी हैं और कोई ये नहीं बता रहा है कि वो क्या बना रहा है। तो आपको यू हैव टू बीट द ट्रेंड एट टाइम्स। यू डोंट नो कि आपका कोई सिमिलर सब्जेक्ट आ गया कहीं पर, कोई सिमिलर सीन आ गया, तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है और लोगों की सेंसिबिलिटी भी बहुत चेंज होती है विद द पॉलिटिकल सिनेरियो, विद द यू नो सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो, थिंग्स कीप चेंजिंग। सो you know it's very difficult. That's why sometimes people are they break the trend because by the time अभी यहाँ आप कॉमेडी चल रही है, हॉरर कॉमेडी से फॉर इंस्टेंस, लोग people are liking it, you know, by the time you make it maybe that flavor is gone, flavor is gone. सेम कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एक टाइम पे क्या। बट एक और चीज़ है मैं मतलब जैसे कि फिल्में जो है ना, आज हमारे कितनी फिल्में बनी है पुलिस वालों के ऊपर फ्रॉम एवर, राइट? कहानी अच्छी होगी तो चलेगी। इट डजेंट मैटर कि अगर आपने लॉयर की कहानी बना दी या आपने कोई लवर बॉय की कहानी बना दी या किसी पुलिस वाले की कहानी बनाई, एज लॉन्ग एज यू टेल द कैरेक्टर डिफरेंटली एंड अ स्टोरी डिफरेंटली, दे आर फाइन। सो यू कांट से वो तो पुलिस वाले पे तो हज़ारों फिल्में बन गई हैं। तो इवन फॉर दैट मैटर आप एक ट्रेंड की भी फिल्म बनाओ, आप अलग बनाओ, अच्छी बनाओ तो चलेगी। करेक्ट, क्योंकि कॉमेडी फिल्म तो सारी कॉमेडी है, बट ट्रेंड ब्रेकर क्या है वो इम्पोर्टेंट है। As actors, आपके लिए कोई एक ऐसा इमोशन है which is the toughest to portray? लोग कहते हैं कॉमेडी बहुत मुश्किल है, you make it look very very easy, so do you? The way I act, I think it's quite funny. अरे आपकी एक्टिंग, आपकी कॉमिक टाइमिंग ही बात। मेरे को देख के लोग आते हैं। हाँ ठीक है, चलो कॉमिक टाइमिंग is probably something that comes very nicely and very effortlessly to you. ऐसा कोई इमोशन है जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? You really have to put a lot of effort. It all depends on the role and the director. So I'm a director's actor. I kind of, you know, just surrender to a director's vision. I don't try to do too much from mine because डायरेक्टर ने कहानी लिखते वक्त, वो कैरेक्टर डेवलप करते वक्त, उसने ऑलरेडी कास्टिंग के वक्त उसने सोचा है कि मेरे कैरेक्टर को कौन कौन निभा सकता है, उसकी एक विश लिस्ट होती है। ये तो पहले से ऑडिशन द डायरेक्टर इज एक्टिंग नहीं, उसको एक विजन होता है ना। पहले दे मे नॉट बी वेरी गुड एक्टर्स, मोस्ट डायरेक्टर्स जनरली आर नॉट वेरी गुड एक्टर्स, okay, and you should not, but they have an explanation for how they want their character. So if you understand that, I think you just follow. Somebody like me would follow. Yeah. Somebody would be like, tell me more how to get there, and then please just be close to the character. I think that's it. Yeah. Anything for you? What was the question? कोई toughest emotion? Toughest emotion. I think in the spectrum of acting, comedy is the toughest. Yeah. For multiple reasons. एक तो yes, I mean timing is something that everybody talks about, but nobody actually. I don't know when people understand what timing is. Yeah. I don't think most people हो गया, timing हो गई. Yeah. So खैर वो एक अलग है. Like you can easily give a punchline little later, early, late, and it can still be perfectly fine. Sure. There can still be a very. I've done that many times. There's a quiet pause in the middle. You should actually say the line, but there is no pause, and then it comes a little later. Yeah. That's also fine. Yeah. So, but I'll tell you the issue क्या है. Issue है कि when you're doing a dramatic scene, na, there's always multiple things that will help you. The lighting helps you. The background score helps you. Okay. The extra tears will help you. Less and more is not a problem. You can cry some more. You can cry a little less. It's fine. It'll still be fine. You know, the way it's shot, all this drama helps the actor to perform well. His performance is enhanced. कॉमेडी में ऐसा नहीं होता. कॉमेडी में अगर तुम्हारे सामने जो एक्टर है उसने अगर सही से एक्टिंग नहीं की तो आपकी जो परफॉर्मेंस वो खराब हो जाती है. देयर इज नो बैकग्राउंड स्कोर दैट हेल्प्स यू. नो ट्याव प्याव कैन हेल्प यू. दैट डजंट नथिंग वर्क्स. You have yourself to do everything. You have done a bad. You can't overdo it. You can't underdo it. You do over, it is overacting. वो खराब हो जाता है. बहुत difficult है. So you have to be just right and perfect. So that is the issue with comedy, and it is tiring. Yeah. मेहर, कोई इमोशन जो आपको मुश्किल? रोमांस. मेरे को एंजाइटी हो जाती है. मैंने बोल दिया था, मैं जब फिल्म में सीन्स थे कुछ, तो मेरे को एंजाइटी जब होती है तो मेरा जो ये है ना, ये ऐसे हिलने लग जाता है.
तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करते तो रोमांस करती अच्छी नहीं लगूंगी मैं। हिलेरियस एक्टर हो जाती है। हिलेरियस तो सब कुछ हिलने लगता है। कुछ पिला दो कि मैं भूल जाऊं कि मैं मेहर हूं। That's the most difficult thing. 25th of October, please go watch Bandaa Singh Chaudhary in a theatre near you. चाहे आपका नाम ट्विंकल हो, रवीना हो, अरबाज हो, अरशद हो, मेहर हो, प्रेरणा हो या फिर अभिषेक हो. It seems like a film which is made with a lot of heart and loyalty and faith and good story. तो मिर्ची के सारे listeners आपको best of luck कह रहे हैं. Any last parting messages that you have? Any at all जो आपने शायद you probably didn't. मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं, प्लीज गाने सुनिए जितना हो सकता है। जी जी वो तो हम डेफिनेटली सुनाएंगे. एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब आए तो बंदा सिंह चौधरी देखने आए, दिमाग में कोई और फिल्म डाल के ये देखने मत आइएगा, वरना ये तो क्या होता है अक्सर हम सोचते कुछ हैं और अपना जो प्री कंसीव नोशन होता है वो उसमें गड़बड़ हो जाती है. Right. Any final tennis tips from you, Arbaaz, because we started with it, so we might want to end with it. Hit the ball when it comes to you.